और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना फिर प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात डिफरेंट पर्सनैलिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। जी समीना, प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आज की बात से। गुल, आज मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको पता है समर आ गया और कनाडा में जो है ना एक इवेंट्स की भरमार हो पड़ी है, जहाँ देखो माशाल्लाह बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं और मज़ा आ रहा है। और दूसरा ये है कि हर तरफ जो है ना लोग खुश हैं और बाकायदगी से लोग जो है ना सारे इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं। इंडिया से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से लोग आ रहे हैं। मीन्स एवरीबडी एक अच्छे ईद का सामान लग रहा है। अभी तक लगता है ईद खत्म ही नहीं हुई है। और समीना, ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ हमारी बैक टू नॉर्मल आ रही है। और बहुत अच्छे अच्छे शोज हुए पिछले दिनों। हमने जो अटेंड किए, लक्ष्मीकांत का किया, इनका किया, अपना आतिफ असलम का किया, और अब जो है ना अल्लाह मियां बस हमारे मुल्क की खैरियत करे। और क्यारा सागा हुआ, अभी क्यारा सागा, हाँ बिल्कुल, क्यारा सागा भी हुआ और क्यारा सागा के लिए भी हमने गेस्ट को बुलाया। तो हर जगह मतलब कह रहे अफरा तफरी, मई का महीना तो पूरा ऐसे ही चला गया है, राइट। अब जाके देखते हैं जून में क्या होने वाला है, और जून की बड़ी लिस्ट भी लगी हुई है, राइट। तो नाजरीन, हमको पता है कि हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हमारे साथ जो है ना अच्छे से अच्छे गेस्ट जुड़ते रहें हमारे साथ। आपने देखा होगा कि बच्चे आते हैं, यूथ आते हैं, बड़े लोग आते हैं, इवन आर्टिस्ट भी आते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है, हमें अच्छी फीडबैक मिल रही है कि आप लोग को हम लोग का प्रोग्राम भी पसंद आता है। तो मैं और गुल जो है ना वो अब और हमें जो है ना हो गया कि हम और मेहनत करें और अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें आपको ला के दिखाएं और आपको नए नए लोगों से मिलाएं। अब जो है हमारे रेगुलर प्रोग्राम की तरफ से थोड़ा सा एक गुल से मैं पूछना चाहूँगी कि गुल, क्योंकि ये गर्मियाँ हैं तो आप बालों के बारे में बता रही थी लास्ट टाइम, आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ केराटिन के बारे में आज थोड़ा सा मुझे बता दो, क्योंकि केराटिन एक्चुअली जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले कि बाल स्ट्रेट करना, और स्पेशली ये वेदर ऐसा है कि वेदर में बाल जो है ज़्यादा, और मेजॉरिटी पसंद करती है कि बाल स्मूथ एंड स्ट्रेट लुक आए। लोग जो है समीना बहुत ज़्यादा हॉट टूल्स यूज़ करते हैं, स्पेशली स्ट्रेटनर जो मैं समझती हूँ कि हमारे टूल्स में सबसे ज़्यादा, मैं हार्मफुल वर्ड जो मेरे अपने टूल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मगर ये बालों के लिए नुकसानदेह, हाँ नुकसानदेह है ही है, राइट। ये हार्मफुल है क्योंकि क्या होता है समीना कि ना जो स्ट्रेटनर है उसकी बोथ साइड प्लेट्स होती हैं जो हॉट होती हैं, दोनों साइड पे हीटर होता है, और उसका दोनों साइड से उनको प्रेस करके हम बालों को एक स्ट्रेट लुक दे रहे होते हैं, जिससे वाकई हमारे बाल डैमेज होते हैं। उसका जो मॉइस्चर है वो सारा ड्राई कर दिया जाता, स्ट्रेटनर की वजह से हो जाता है, बाल बर्न हो जाते हैं। और दूसरी बात ये, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बाल केमिकल ट्रीटेड है, राइट। इवन यंगस्टर्स ने भी हाईलाइट कराई हैं, कलर कराई हैं, और वो कुछ ना कुछ विजिबल है, कुछ विजिबल नहीं भी है, मगर उन्होंने कोई ना कोई कलर और लाइक प्रोडक्ट यूज़ की हुई हैं, और उसकी केयर के लिए वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे होते प्रोटेक्शन के लिए बालों की, क्योंकि फैशन करना होता है। फैशन तो मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी बाहर जाना होता है, तैयार होना होता है, ज़रूरत होगी जल्दी का काम, फॉरन। ये सबसे जो जल्दी होता है वो होता है स्ट्रेटनर के साथ। बिल्कुल। और इसके लिए क्या है कि हमें मैं जो ज़्यादा कहूँगी अपने क्लाइंट्स को कि कोशिश करें कि केराटिन करवा लें। अच्छा, ठीक है। उसका क्या होता है कि इसकी जो बेस है, इसकी इंग्रेडिएंट बेस जो है वो आप समझ लें कि डीप कंडीशनिंग है इसकी। इंग्रेडिएंट्स केराटिन एंड प्रोटीन, और जिसकी वजह से बालों को हम
एक हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। और उसमें क्या होता है कि लुक जो है बाल की वो आ जाती है, थोड़ी कंपैरेटिवली स्मूथ होती है, बाल जो है वो स्ट्रेट लुक देता है, उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बाल वॉश एंड वेयर हो जाता है। अच्छा, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप डेड स्ट्रेट या स्लीक लुक हर वक्त दें। एटलीस्ट ऐसा हो जाता है कि वॉश करने के बाद आपके बाल मैनेजेबल होते हैं, थोड़े फ्रिज कंट्रोल उसमें से होता है, शाइन आ जाती है। आपने सुना होगा कि एक पहले ज़्यादा हमने रिबॉन्डिंग एंड जैपनीज स्ट्रेटनिंग, समीना उसमें क्या होता है कि हमारे मतलब 3 बॉन्ड्स जो है वो डेड हो जाते हैं बाल के। अच्छा, मतलब उसको बहुत लगाया जाता था ना केमिकल से? नहीं, वो डिफरेंट, टोटली ही उसकी इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं कि उसको बालों को डेड स्ट्रेट करने के लिए हमारे बालों के तीनों बॉन्ड्स को डेड कर दिया जाता है कि अच्छा। बाल वो बेजान हो जाता है एक्चुअली। ओह अच्छा, तो नुकसान उसमें आपने देखा होगा कि क्या कि न्यू ग्रोथ जब होती है तो वो कर्ली होती है एंड बाकी जो होती है वो स्ट्रेट हो जाती है। मगर अच्छा। केराटिन जो है वो एक बालों को एक कवर कर लेती है, प्रोडक्ट जो है उसकी डीप कंडीशनिंग करती है, उससे वो हमारी मतलब मैनेजेबल बाल हो जाता है। तो गुल कितने अरसे तक रहता है? इसका जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये हो जाता है कि इसमें बालों की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपके बाल की क्या कंडीशन है, आपका बाल कितना स्ट्रांग है, आपका बाल कितना आपके क्यूटिकल्स पर होता है, फिर उस पर कि आपने उसमें ब्लीच ने कितना उसमें रोल प्ले किया होता है। अच्छा, तो ये सब आप क्लाइंट के बाल देख के बताते हो? जी, वो क्लाइंट के बाल देखकर उसके बाद देखें, कुछ का असर 4 मंथ्स रहता है, कुछ का 3 मंथ्स, सेम प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, ये बालों की क्लाइंट की मतलब कंडीशन वाइज हम रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं दे सकते। आप यकीन करें मीना कि मेरे अपने क्लाइंट्स जिन्होंने केराटिन करवाई और 1 ईयर तक उन्होंने उसे एंजॉय किया। हाँ, तो ये होता है ना गुल, देखो केराटिन जो है इसको मतलब ज्यादातर ये कर्ली बाल है और वेव बाल के लिए होता है, या जिनके स्ट्रेट होते हैं तो उनको तो जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, स्ट्रेट बालों के लिए भी, क्योंकि आसमीना क्योंकि हाइलाइट्स कलर करने से बाल जो है वो ड्राई हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। तो अगर आपका नेचुरल हेयर स्ट्रेट है मगर वो फ्रीजी हो गया, बहुत ज्यादा फ्रीजी हो गया, वो उसकी लुक जो है वो शाइनी नहीं है, डेड सी है, तो उसके ऊपर भी एक आपको अच्छा रिजल्ट। मैं तो समझी सिर्फ कर्ली हेयर्स के लिए। कर्ली हेयर का ये होता है कि उसके कर्ल जो है वो हम टेम्परेरी लिमिटेड टाइम के लिए ना वो स्ट्रेट लुक आ जाती है, मगर डेड स्ट्रेट नहीं होता। अगेन कि ना डिपेंड करता है कि आपके हेयर की क्या कंडीशन है। बहुत ज्यादा कोर्स है तो इट विल टेक लेस टाइम। जी, अच्छा फाइन है तो ज्यादा टाइम लगा लेगा। और उसको भी ये है कि केराटिन करके नहाने के बाद भी अगर आप ड्राई या स्ट्रेट करते हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको। एक तो एक ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसका ये हो जाता है कि थोड़ा सा हम अपने फिर क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि आपने कैसे इसकी आफ्टर मतलब केयर करनी, आपने इसकी कैसे केयर करनी है, कि उसको वॉश एंड वेयर मीन के बालों को आपने गीले बालों को ब्रश कि उसी तरह छोड़ दें, एयर ड्राई होने दीजिए। अगर आपने ड्रायर यूज करना तो ड्रायर एंड ब्रश की क्या पोजीशन होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं समीना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ। मैं जब अपने क्लाइंट को साथ साथ एजुकेट करती हूँ ना, बता रही होती हूँ कि अगर आपने ऐसा करना है तो आपको ये करना होगा। अगर वैसे तो आज की जनरेशन जो है वो खुद ही बहुत स्मार्ट है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं खुद, लेकिन ये है कि हमें फिर भी खुद को तसल्ली और बताना पड़ता है और बताना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि नाजरीन अब ये जो वेदर है इसमें ज्यादा से ज्यादा गुल का मेरे ख्याल से केराटिन जो है हर वेदर के लिए है या ओनली समर के लिए? नहीं, ऑल वेदर्स के लिए। जी, वो वेदर्स के लिए है। समर में ये हो जाता है मीना कि समर में बाल जरा थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, तो ओपन रखने होते हैं और एयर ड्राई करने का भी मौका मिल जाता है कि बस बाल जैसे वेट हेयर भी है आपने छोड़ दिए वो खुद ही ड्राई होंगे। जैसे आपने पहले कहा था कि छोड़ दिया करो बालों को, गर्मियों में एयर ड्राई होने दिया करो, मौका मिलता है एनर्जी आने के। तो एक एनर्जी ऐसे आती है कि आप ड्राई बाल रखो, ड्राई करो, मतलब एयर ड्राई करो बालों को, अपने बालों को ज्यादा डैमेज ना करो समर में। और दूसरा ये कि अगर आप केराटिन करो तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट करने की, क्योंकि आदमी लोग जो है ना पसीना हो जाता है तो नहाते बहुत है, तो अब कर्ली बाल हो जाए तो बार बार वो कर्ली हो जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा ये रहता है क्योंकि सर्दियों में कम नहाया जाता है, लेकिन वेदर की वजह से आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट जो है आपको, अगर आपको बहुत मतलब लुक चाहिए भी तो आप
क्विक जो है वो क्विक उसके साथ जल्दी जल्दी लाइक वो करने से आपको वो इफेक्ट जो है वो मिल जाता है। तो नाज़रीन, अब जो है मैं बहुत ही अच्छा किया बताया गुल ने हमें केराटिन के बारे में, और वाकई में ये अच्छी चीज़ है और इट टेक्स काफ़ी अर्से तक चल जाती है। बहुत से लोग टूर पे जाते हैं करके जाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए हेयर ड्राई करने में। और मीना, इसकी मैं भी आपकी दरमियान में बात करूंगी कि इसका ऐसा भी मैं बताऊं कि कुछ क्लाइंट्स पर इसका रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेगा। उसकी क्या वजह है मैं बताना चाहूँगी कि अगर ये आप सोचें कि जी मैंने केराटिन की वजह मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला, कि अगेन के ना डिपेंड करता है आपके बालों की कंडीशन पे। समटाइम्स आपने इतनी ज़्यादा ब्लीच यूज़ की होती है या समटाइम इतने डैमेज होते हैं कि आपने सही प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं की होती आपने, जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो नाज़रीन हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो नई जनरेशन की यंग लड़की यूथ है और शी इज़ वेरी टैलेंटेड यूथ, और उन्होंने अपने इज़हार किताब की शक्ल में वो लेकर आती हैं। तो उनका नाम है मेनाहिल उस्मान। आज हम मिलते हैं हमारे यंग टैलेंटेड यूथ से। स्टे ट्यून, और ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे साथ जो यहाँ मेहमान है वो यूथ है, वो यंग है जनरेशन की। तो आज हम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेनाहिल उस्मान। तो वेलकम मेनाहिल, हाउ आर यू? I'm good, thank you for having me. Okay, so as I told my guests that my audience that you are very young and we all know that you are young. तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, can I speak in English and Urdu both with you? It's okay? For sure. ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ कि first of all, what is your background? मैं पाकिस्तान से इस्लामाबाद, but I moved to Saudi Arabia at a very young age. So I was brought up there for about 10 to 12 years before I moved there. So मुझे अब 5 साल हो गए इधर कनाडा में. So that's a low key. Okay, so you are basically not even 19-20 yet? I am 21. 21, okay. So अब आप यहाँ पे कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी जा रही हूँ. So how do you feel coming from Saudi Arabia to Canada? Is it how is your, because you are youth, you are coming from one very Islamic state to another country which is totally opposite. So how do you feel coming here? If I'm talking about in Islamic way, I think it depends on you, how you treat it. But for me, I think I miss home a lot. Saudi is home to me. So I miss it a lot. It was completely different. I feel like people think that it has less freedom over there, but trust me, it has way more freedom over there than Canada. It's a very open and very beautiful country. So if once now I will ask you one word. You said it's very open. In what mind you are saying it's open? So बहुत से लोगों को लगता है कि सऊदीया बहुत closed है, बुर्का है, एडवांस लड़कियों को कोई इजाज़त नहीं है. But I feel like यहाँ there's 10 times more crime, 10 times more I would say not freedom. There's no freedom over here than over there, because I had way more fun and I had way more easygoing friends and everything over there than rather here. Okay. So यहाँ पे because there are too many cultures, basically. There are too many cultures and they barely accept you. In my point of view, our Pakistani culture do not accept us a lot at the same time. ठीक है. तो अब ये तो थोड़ी सी, क्योंकि because you know there are many people in Canada are now working for youth. There are too many people who are trying to guide youth. वो कह रहे हैं कि youth परेशान है, youth को पता नहीं है, youth गड़बड़ कर रहा है. There are many organizations which are taking care of youth. Do you think there is any type of any organization like that which has helped you out? Not yet. I think whatever I've done yet since I'm in Canada, like job-wise, study-wise, I've done it all by myself. Even my counselors or anything, they weren't as helpful as I thought they would be. But counselors in the colleges and schools and universities. At the same time, I feel like there might be people I haven't met yet, so I don't want to judge them. But for me, I'm here because of my parents' advice, to be honest. Otherwise, I don't think anyone else has helped me a lot. Good, because you know, I just asking you all this because यहाँ पर बहुत से लोग कनाडा से, पाकिस्तान से, वहाँ जो generation है वो कहती है कि हम यहाँ आए. इंडिया से बहुत लोग आते हैं, चाइना से बहुत लोग आते हैं. And we have seen, personally we have seen
they get more frustrated here. उनको job का tension है, bill payments का tension है, family नहीं है, they all are alone. You are lucky that you have your families here and you have come as your whole family has been here with you, with all your sisters. Naturally, then they won't let you stay alone, being our culture in Saudi Arabia. और हमारे यहाँ तो हमारे कल्चर है कि हमारी बेटियाँ बेटे हमारे साथ रहते हैं जब तक वो आगे ना निकल जाएं, वो शादियाँ ना हो जाएं, they don't go forward. अब नाज़रीन मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि मैंने इनको यहाँ बुलाया क्यों है. We will see what she has done और उसने क्या जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही है उन्होंने क्या पढ़ा है और उन्होंने क्या किया है, right? So can you tell us that what achievement have you done, what have you done, what you have written, so that my audience know that why you are here? So I go to York. I'm still a second year student. I'm studying law, and I write a lot. So I started writing since I think I was 13. I started writing my first book. I'm still on my third one. So for one of my books, it's called Roots, Hope and Fam. It's about a lot of hope, a lot of dreams, a lot of the base that is my friends and my family, of course. So I've written that when I was 13 years old, and I finished it off around 4 to 6 months. So that's okay. So it took you so many years to write that book? No, it took me just 6 months. So at the age of 13, you wrote a book which you finished it in 4 months. Yes, 4 to 6 months. Okay, और उस short period में कैसे? तो मेनाहिल कब से आपको ये शौक था लिखने का? I think I'm more of a writer. I read a lot, so I needed someone to listen to me, I guess. So that book was my way to convey my message about how to not lose your dreams, do not lose hope in anything, and stop hating the word love so much. It could come in so many forms. Very good. So इसका मतलब है कि you are a motivational writer. So, right? You are a motivational writer and you write upon what you feel is right. Hope means, you said hope, right? Yes. So hope means that people in that story, in that your book you wrote about how you should. Where is Basra? Let me know. Where will we find your book? Where it is? You can find it on a website called Wattpad, Wattpad. I am still getting on to publishing it soon, hopefully, inshallah. But for now, you can find it on Wattpad.com. Wattpad. So abhi to it's a new generation technology, as the people like to go on there first rather than doing the publishing, That's right? Though people, and I've seen senior people also reading books now on iPads, right? Yes. So those who are readers, those who know about that, they definitely go for it and they look to read those stuff. And now you said that in your first book, Hope. So नाज़रीन 13 साल की उम्र में इन्होंने पहली किताब लिखी है होप के नाम से, और होप में शी से बता रही हैं कि वो उन्होंने सारा ये बताया. It's not only about female, it's not about male, it's general book. It's a general book and topic is hope, जिसमें उन्होंने Roots, Hope and Fam. Hope and Fam. Yeah, Roots, Hope and Fam. Okay, tell once again. Roots, Hope and Fam. Why you say Roots, Hope and Fam? Because I feel like roots, there's so many routes you could take in life. Some could be good, some could be bad. There's a lot of positivity and negativity. So that's my roots over there. My hope is my parents, my own sister. She's my biggest hope, and my dad is my biggest hope in the world. And fam is my friends who became my family, who are the base of this book for me. So they're the reason I've written this book. So you have made that book your root, hope and fam as your basic start, that what route should people take and how they should take the routes, what should they decide to take the routes, right? And then you said that what is your hope, that how you should achieve your who is your hope, who is your idol or something like that, right? And then you will go for your families, that how your friends became your family. So it's good about that people know that okay, how to select those paths, right? ठीक है. अब दूसरी, which is the second book? I'm still writing it. It's called My Hirayat, His Moonbow. I'm still onto it. Currently on like 36-40 chapters, still getting there. But it is a little bit, I would say, characters based onto me, about my life story, how I came here, and how I'm managing things with everyone, with every sort of person, either it's a boy or a girl. So it's based a lot on life. My books are mostly based on life. Yeah, because that's what I'm saying. You are writing what you are facing. Yeah, exactly. Right? You are writing what you are facing. That's why you wrote. So I heard that you were reading something about females and all that stuff. It's not just about females. I feel like male and female are so stereotyped in this world
that they deserve to be treated equally. It shouldn't be that a man can't wear makeup or a man has to go out to throw out the trash at night. It should be equally how a woman can also go out and a woman can do this and everything. I think it's our Desi culture itself, how it says कि औरत को ऐसा होना चाहिए और मर्द को ऐसा होना चाहिए. I feel like कुछ चीजें you should compromise with it because we're way past that generation where we have to think at such a stereotype. So don't you think that when you say that, I will be a critic over here, okay? Don't you say that if you say a woman that's what I don't want to, मैं नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी कि मेरे लिए मसले खड़े हो जाएं. मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ just to be a topic general word कि अगर आप औरतों को बोल देते हो कि आप आज़ाद हो, so they don't understand the meaning of आज़ाद. They don't understand the meaning of freedom. Do you agree with me? I don't want to say anything wrong. Because you see, if you say the freedom, they just as we are in Canada, right? Actually, freedom word ऐसा है कि इसको different इसके मतलब निकल आए और लोगों को अगर आपको ना freedom है तो वो बास कहीं और तरीके से चले जाते हैं, कोई कहीं और चला जाता है. तो what do you say about that? Being a writer, I'm asking you. It's not just a woman. I feel like मर्द को भी तो देखा जाए, उसको freedom देते हैं तो वो क्या करता है. हर मर्द बहुत अच्छा नहीं होता और बहुत से मर्द अच्छे भी होते हैं. So I feel like just women ही क्योंकि देखा जाए कि अगर उसको freedom दे वो कुछ गलत करेगी जाकर. एक मर्द भी कर सकता है, but at the same time I'm not defending women. I'm not a feminist, so I'm not hating anyone. But the thing is कि I feel like दोनों तरीक़ों से देखा जाए, अगर औरत को एक freedom दी जाए, we're not saying that we want the freedom to go out all night. I'm saying freedom as in let them work, let them study, let them be something for themselves. And what's about freedom and rights? Exactly, the rights that we're talking about. उसमें होता है ना गुल में अभी ये बच्चे हैं छोटे हैं, लोग लिख रहे हैं, इसमें इतनी है भी, इसने इतनी सी उम्र में she is right to write things, उसने अपने motivations को बाहर निकाला है, right? And you have wrote what you faced, so you had a courage to do that, and you must be a good story reader also, and you took out all that in your that how you are feeling. लेकिन अब मुझे मैं यहाँ यही बोलूँगी कि हम आदमी औरत मर्द की बात करें तो जहाँ तक मैं being a female ये समझती हूँ कि औरत अगर पढ़ी लिखी हो, अगर वो सोसाइटी को समझती है और वो शी इज बेटर पेरेंट देन अ फादर, बिकॉज फादर जो है वो तो चला जाता है ना, ही वर्क्स मोस्टली. अब औरतों ने काम करना शुरू किया बिकॉज ऑफ द लाइफ स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस इन द वर्ल्ड, राइट? महंगाई इतनी हो गई है कि एक वो जमाना नहीं है कि एक आदमी खाएगा तो 10 कमाएगा तो 10 खाएंगे, राइट? सो अब और मुझे बताओ, ऑन व्हाट आर द अदर स्टफ दैट यू लाइक टू हैव रोट इन योर, कोई स्टोरी है उसमें या कुछ है? It is based on 2 characters. It's basically a love story that I defended on. It was also on male के how हम मर्दों को बुरा समझते हैं, कैसे वो रो नहीं सकते या अपने आप को इजहार नहीं कर सकते. They can't tell us what they're feeling or cry and emotional. So I wrote a book about how the girl actually sorts of thinks that he's doing something wrong or something like that. Like, it's just a basic example how he might have betrayed her. But at the same time, us women misunderstand a lot of stuff. We have a lot of misconceptions. So that is... We are more hyper than men. Exactly. We're way more hyper. We do not think logically sometimes. So I wrote about that, how they fell in love and everything, and how there were a lot of struggles they went through to get to a happy ending in the end. So that's my main hope, that they do fall in love and find their fantasies after a lot of struggles between parents and sisters and not getting accepted by society and the family itself. So do you think, I just want to elaborate on that. So उस story में जो आपने लिखा है, this is not yet on the web. Not yet, right? You are still in the last chapters. You have finished it, or? Oh, I finished this one. Oh, you finished it, that also. Okay. So I thought that you have 3 books. So the first one was Hope. Second one is this one. What is the title of this one? This one is his Harayat, My Moonbow. It's a little legendary word that says that he's the moonlight that shines on me and I'm his moon, basically. That's a little tragic book. It has a lot of misunderstandings that I faced in Canada itself. So it's based on one of my very best friends, a very dear friend of mine.
he or she, they basically inspired me to write it upon me and itself. So it involves misconceptions of our parents, of our school, rumors that spread around without any acknowledgement. It's something like that. So that is the young generation is facing everywhere. Yeah, I will tell you that this is the main thing. The young generation, I will say, when as soon as you finish high school and you go into the colleges, you face a lot. You face a lot. Because there is less of acceptance that this cannot happen to me. Exactly. I am the superpower, right? The girls, the boys, they all think that they have grown up, right? That was back at our ages also. When we used to go to school, and after school we are into the college, and then we become, from kindergarten to grade 1 we go, then as soon as we go high school, we don't see the back one. They are very young for us, right? That's normal. And then when we go to the colleges or universities, then there is another life. There where you face practically true problems, because you are not ready to accept what is happening, because you find friends who are very dear to you. 1 minute they change. They have got teachers who are very good to you. You do something, they keep on changing, because there is a lot of change coming here. People coming, people going. You don't get the same people. Every class is different. I think so, first if you are in a chemistry class or English class, second class you are with other people, third class, so you don't know, you all are surrounded all over, right? So that what made you inspire, I believe. Yes, exactly. And that you face many problems in that culture. Oh, okay. So that but you know what, that is when you wrote all that it gave you any satisfaction? Everything came out? It did. It sort of did when people started agreeing with me and how they're going through the same thing. It makes me feel better that I'm not the only one alone in this. Everyone's fighting their own battles, and they're so strong that they're actually getting through it. So it makes me feel strong that I'm here today, sitting here, and doing something for myself. So it makes me happy. Okay, so I'm in a youth conference now, right? I'm doing consultancy. So नाज़रीन, मैं यहाँ पे लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, फिर आती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ मेनाहिल के साथ, और इसी को हम जारी रखते हैं कि इन्होंने क्या किया, और भी मजीद मैं इनसे सवाल पूछती हूँ, क्योंकि नई जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल शायद सेशन हो। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा ही मुझे मजा आ रहा है एक बिल्कुल यंग बच्ची के साथ बात करके कि उसकी क्या इमोशंस हैं, कनाडा में आने के बाद उसकी लाइफ कैसी हुई और उसको क्या हुआ कि इसने इतना कुछ लिखना शुरू किया। अब नेचुरली पढ़ना पड़ेगा जस्ट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इनटू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, राइट? So basically, I will think that the thing which you wrote about was your experience you are facing in the universities here. मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी पढ़ना चाहिए ताकि जिनके बच्चे जा रहे हैं उनको पता चले कि भाई उनके बच्चों के साथ उनकी बच्चों की क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मेरे ख्याल से we have so many cultures, so you sometimes don't know which culture you are accepting, right? Don't you think हम इस्लाम हमारे पास सिर्फ एक इस्लाम का कल्चर है and we are proud that we are Muslim, right? But when we are into other cultures, तो hमें लगता है कि हमारे में तो ये मना था, ये तो इतना open है, ये है। तो do you feel all that conflicts? I don't think so. I feel like my deen, if you're talking about, got stronger here. I blocked out everything else because I have to focus on my akhirah too at the end of the day. But at the same time, I do look at, okay, this is accepted in their culture and this is not accepted in my culture. But I never go like, oh, why is it not accepted in my culture? Because I feel like at the end of the day, if we're gonna make it to Jannah, so we have to accept what's ours. Because you said a very good thing. So who taught you all this? Your parents taught you all this? My mom and dad. Yeah. So means you have a strong family who has a strong belief, right? There are some families who don't have strong belief. Yes. So उनके बच्चे भी तो बिखर जाते हैं ना, right? Because they say, okay, we will हम हलाल भी खा लेते हैं, हराम भी बिस्मिल्लाह बोल के खा लेते हैं, right? I'm being very frank. So वो क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हराम भी मिल रहा होगा हमें समय लगेगा हमें हलाल मिल रहा है, बिकॉज हम हलाल कंट्री में रहते हैं, वहाँ हर चीज टेक्निकली इस वजह से हमारा दीन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज वी हियर हैव टू लुक व्हाट इज हलाल एंड हम हमारे मुल्कों में रहते हैं
तो हमें एक तरीके से ब्लाइंड फोल्ड, हम सऊदी अरब में या कोई हलाल हराम चीज नहीं होगी, हम पाकिस्तान में है कोई हराम चीज नहीं होगी, राइट? यहाँ पर आके इसलिए मेरे ख्याल से हमारा स्ट्रांग हो जाता है. व्हाट डू यू एग्री विद मी? I agree. We're very strong here. I feel like you find God so much closer to you that you need Him because आप यहाँ आके frustrated हो जाते हो, stressed हो जाते हो. So at the end of the day, you have Allah. That's it. You're the one. At the end of the day, you're gonna go to Him, cry your sorrows to Him. It's Him, and then the next is your parents. That's it. There's no one else you can trust over here. Very good. You're a good. Means I will say that you are a motivation to other youngsters too, and I think that they should listen because being a parent too, my daughter has also gone to universities and she's in commercials. I know that what she has gone through. क्योंकि जब आप डोम में रहते हो, घर से बाहर जाते, चलो अभी आप मिसेस आगम, अब तो इतना ये हो गया है कि यू go to universities nearby house, but those students who live on still having their parents here and live on dome, it's very tough life for them to live in the residency में रहते हैं, तो वो बहुत कुछ देखते हैं but they cannot express. वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, पेरेंट्स को ना बताओ वरना मुश्किल हो जाएगी, राइट? पेरेंट्स को तो डरते हैं बताने में. और ये यंग जनरेशन का सबसे बड़ा वही होता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है, they first go and tell to their friends. Yeah, that's true. Right? So वहाँ पर कभी-कभी बड़ी गलतियाँ होती हैं. That I think you have faced it, and that's what you have tried to. Because see, we have learned with our experience. That's true. You are also getting experience. When you will grow more, you will naturally take it over, right? कि भाई ये चीजें होती हैं. Be careful. So first should be your parents, should be your friends, right? Yeah, right. And I hope that nowadays parents should, I will say to the parents कि आप भी टाइम निकालें बेटियों के साथ, बेटों के साथ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियों के साथ, बेटों के साथ भी बड़े मसले होते हैं, वो भी बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लड़कियां साथ होती हैं, उसको कोई पसंद होती है, कोई उसको पसंद होता है, कोई उसके साथ चक्कर चल ही रहा होता है, राइट? कोई फ्रेंड्स का लग रहा होता है, कॉलेज की पढ़ाइयों का होता है. क्या बोलती हो? तुम्हारे माशाल्लाह दो जवान बच्चे हैं, बेटे हैं, यूनिवर्सिटीज में गए, तो वो लोग भी हमें आके बताते नहीं. बिल्कुल, राइट? और हम लोग कनाडा में पेरेंट्स, दे आर नॉट मोस्टली हाउसवाइफ्स. Mostly women from home also are working. There are too many other responsibilities. बच्चों को लगता है कि माँ बाप हमें नहीं लिफ्ट कराए, लेकिन वो अगर if they put their foot in their parents' shoes, they will see कि मम्मी भी बिजी है. यहाँ पर उनकी भी अपनी सोशल लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ भी है और मेड लाइफ भी है. I think because everybody cannot afford maids here, right? We work 24/7. हम घर का भी काम करते हैं, हम बाहर का भी काम करते हैं, हम बच्चों को भी देखते हैं. माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंट्री में ज्यादा है एंड माएँ भी बहुत सफर करती है. बिकॉज आप लोग जो है ना, जैसे बाकी अपनी सारी ड्यूटीज में पेरेंट्स को ये भी ऐड करना, मतलब ऐड की हुई है कि फ्यू पेरेंट्स में मदर्स बहुत क्लोज हैं बच्चों से, कुछ फादर्स बहुत क्लोज हैं, लेकिन गुल यहाँ पर क्लोज होना पड़ता है. क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा, अगेन मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि हमारे कल्चरों में बहुत डिफरेंट है जी. 4-5 कल्चर्स बहुत है हमारे, तो उसमें हम लोग फंस जाते हैं. हमारे बच्चे, अब ये जो जनरेशन, हमारी जनरेशन जो आई थी वो ज्यादा फंसी थी. असल में ये लोग कम फंसेंगे, इनके बच्चे को देखे हम यूज्ड टू. यहाँ पर हम लोग को ज्यादा जो फेस करना पड़ता है ना, वो कल्चर एंड रिलीजन और फैमिली वैल्यूज. फैमिली वही ना, उसको लेकर जब बच्चे जो हैं उनके लिए बड़ा, जिसे कहते हैं, चैलेंजिंग है कि वो कल्चर एंड रिलीजन को लेके कैसे चलेंगे. और इसी वजह से देखो उसको मोटिवेशन मिला और उसमें देखिए ना कि जी उसमें पेरेंट्स का बहुत ज्यादा हाथ होता है. हाँ, लेकिन बस यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगी, बच्चों से भी कहूंगी, पेरेंट्स से भी कहूंगी कि जस्ट टेक 1 hour, half an hour टू सिट विथ योर किड्स एंड सी कि आज क्या हुआ था, क्या कर रहे हो. कहीं ना कहीं वो दुख आपको बता ही देते हैं. Every day if you talk to them, क्योंकि वो बताएंगे आपको कि जी जहाँ पर गैप आ जाता है ना पेरेंट्स और बच्चों में, वहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है. हाँ, वो और हमारे में हमारे बच्चे साथ रहते हैं. हम जिस कल्चर में रहते हैं वो बच्चे साथ ही नहीं रहते. Right? You will agree with me? I do agree कि there are some families that do not keep their kids with them, and then one gap आता है, you cannot share with your parents and everything. Personally, in my experience, I've never had that. Shukran. Thank you so much. एक और बुक लिख लेती तू. Inshallah. So
but my parents have kept very close to them, especially my sisters and everyone. How many siblings you all are? Oh, we're 3 sisters. I'm the eldest. Okay, mashallah. So, बाकी sisters भी are into these type. They like to write, or they are in some other. They like to become something else. They're my younger sister. She's an artist completely. She loves to draw and everything. And the youngest, she's like 7, 8. So she's still looking at what she wants to be, but she's very much into cars and stuff. Okay. So we're all 3 different people. But वो यही होता है ना, जैसे जैसे बड़े हो जाते हो, the way you grow, that everything keeps on changing. Exactly. आप सोचते कुछ होते हो, बड़े होते हो कुछ होते हो, यूनिवर्सिटी से निकल के कुछ और बन जाते हो. ये हमारी कंट्री नहीं है कि सिर्फ टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है. There are thousands of fields here, right? So there is every field. It's itself very interesting. So we are in a country. I know that you are still missing Saudi Arabia, and I still miss Pakistan. चाहे कुछ भी हो जाए, right? तो हम लोगों को ये होता है कि हम लोग अभी भी 2 किश्तियों में सवार हैं, right? Yes. So we are in a not balanced. Maybe 3rd or 4th generation हमारी जो होगी वो maybe they will be pure Canadian type होंगे या कुछ भी होगा, depending again उस वक्त क्या होता है, I don't know. But the thing is कि it is very nice to talk to you. अब मुझे आप ये बताओ, जो आप तीसरी बुक लिख रही हो, पहले तो आपने बता दिया आपका एक होप का और था, दूसरा आपने एक ही बताया, तीसरा मुझे बताओ कौन सी बुक आप लिख रहे हो? I think I'm trying to add romance to arranged marriages to force होती है. I'm trying to add a little bit of interest and fun into it ताकि लोग bored भी ना हो and they have fun and they're educated about it as well. Because I feel like in a couple there's a lot of stereotypical thoughts that you have to have an arranged marriage. It has to be arranged by your parents. Some people don't even have the right to talk, to speak up if they like someone or not. So this is something I'm writing on, how 2 people are forced into marriage and eventually do fall into love, and some actually never do and they cannot make it out. They cannot compromise into the marriage. So they have some problems over there, something like that, but this is something I'm basically. So the problem, so the topic of your, or the I will say the motive of your 3rd book is, I think you're more into Pakistani culture or Saudi Arab culture or Dubai culture में confused है. So now you want के Pakistani, how our culture from marriage, they're doing arranged marriage, they're forcing their kids to do arranged marriage. But I don't think so that the kids listen to us now anymore, okay? So they are into the arranged marriages, and then what happens after the arranged? Because in our times, when we were there were still love marriages. There were still people running around. भाग जाते थे लड़के लड़कियां, right? तभी तो फिल्में बनती थी. तो अब जो है ना, अब भी इसी कल्चर में, लेकिन हम लोग के दौर में ये था कि we were taught to compromise. That's true. That was the word which I always tell, even I tell to my kids, compromise is the only thing which makes your relation survive. Right? So आप उसमें अपनी बुक में थोड़ा सा compromise का भी लिख देना मेरी तरफ से. For sure. I've learned compromise from my mama. My mom is very compromising and very calm. So this is something I like about her. मैं सीखना चाहती हूँ, खुद भी मैं try करती रहती हूँ क्योंकि compromise, because I feel like not only a husband-wife relationship, in every relation compromise. And अब के टाइम में एक और चीज भी अडॉप्ट करना, पेशेंस. क्योंकि उस जो हमारी जनरेशन में थोड़ा सा कंपैरेटिवली पेशेंस था. अभी जो आने वाला मतलब टाइम है और जो इसके पेशेंस के ऊपर एक थ्योरी भी आई है कि जो लोग, क्योंकि हम सारा वक्त इंटरनेट में है, राइट? सो जो लोग सारा वक्त इंटरनेट पे बैठे होते हैं ना, और वो सर्फिंग जितना करते हैं ना, उनका माइंड उतना हाइपर होता है जी. तो आजकल तो ज्यादा से ज्यादा काम इंटरनेट पे ही हो गया है, राइट? सो मेरे ख्याल से उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए. लेकिन ये तो अब उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज का मैरिज से शादी के बाद लव का बता रही हो आप, राइट? कि अरेंज मैरिज होती है और उसके बाद कोई चारा नहीं है, शादी कर ली, अब चारा नहीं, अब लव ही कर लो. मेरे छोटे से माइंड में बहुत कुछ है. मैच्योर, क्योंकि वो एक होता है ना, आपको शौक होता है जो मैं फील कर रही हूँ मैं लिख दूँ,
मुझे शौक होता है, मैं फील करती हूँ, मैं बोल देती हूँ। I cannot write. आपकी फैमिली में कोई और भी राइटर है, कोई और लिखता है? No, I'm the first one. और टेक्नोलॉजी पे लिख रही हो, लिखने के बाद उसको कौन सा केस किस पे आ रहा है? Wattpad पे आता है, राइट? एंड उसके बाद जो है, अब जो तीसरी आपकी जो है अच्छी लगी मुझे, आई विल ट्राई टू गो थ्रू विद योर थिंग्स। और नाज़रीन आप भी ज़रूर देखिएगा और पढ़िएगा उस पे से, इंटरनेट से। नाम एनी इंटरनेट, एनी वेबसाइट, एनीथिंग, और या खाली Wattpad पे चले जाओ? Wattpad.com पे चले जाए, और you can download it on App Store. Okay. Yeah, just type in Menahil Amina, उस पे सारी आ जाएगी। माशाल्लाह। तो उस पे आप मेनाहिल उस्मान अगर डाल देंगे तो फिर आप जो है ना उसका जो है आपको ये बुक नजर आ जाएगी और यू कैन रीड। और मेरे ख्याल से आप खुद पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि आपको फील हो कि आपके बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो होते जा रहे हैं उनकी, क्योंकि इसने जब छोटी उम्र से लिखना शुरू किया, आई थिंक शी इज शोइंग हर ओन लाइफ कि किस तरीके से हम ग्रो हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, दे डोंट इवन नो कि बच्चों के साथ स्कूलों में क्या हो रहा है। सिर्फ वो इंग्लिश बोलकर आ जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ने आ गए, पढ़ लिया उन्होंने, राइट? उनके अंदर जो एक अनसिक्योरनेस होता है, राइट, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर मेरे ख्याल से तुम्हारा ज्यादा फोकस है उसके ऊपर। और फिर तुम आके वही हमारा जो एक कॉमन मसला है पाकिस्तानी लोगों का कि इनके बच्चे शादियां नहीं करते, उनके ऊपर तुमने उठा के एक और लिख दिया है कि भाई उसको अरेंज मैरिज से लेके उसको लव में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड व्हाट इज द लाइफ दैट कपल इज गोइंग थ्रू एंड हाउ दे आर गेटिंग बैक, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन वो अभी आपने ऑन उस पे नहीं डाली है Wattpad पे। तो हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक? I think it should take me about 6-7 months at the same time. I'm still starting it, so I'll get there. तो आपकी लाइफ के 3 टॉपिक तो हो गए, अब चौथा टॉपिक कोई इंटरेस्टिंग है इसमें आने वाला जो सोच के रखा हूँ कि अभी मैं क्या और इस पे लिखूंगी? I think it will be based on something that I go through. I think I would base it on my work life and my social life, because I think I've missed out a lot. मैं बहुत social life के बारे में लिखती हूँ उसके बीच में, but I think it needs a specific topic, so हो सकता है we'll have to. What do you think? चले आज आप बैठी हो, आपके सामने पूछती हूँ, यूथ हो आप, यंग हो, what do you mean by social life? I feel like मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये आती है, if boys and girls hang out together, बहुत issues बनते हैं। I think हमारे कम्युनिटी में सबको लगता है कुछ ना कुछ चल रहा है, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आप, I feel like आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, your mind has to be clear, you need to know what you're thinking, and I think it's okay to hang out. By the same time, I do go with what my dad and everyone has taught me, they cannot be friends, because I get it, Islam में boundaries हैं, and those boundaries are set right. So this is something I would like to bring in a book, कि boundaries क्यों रखी हुई हैं, they're perfectly fine, right? जो because हमारा मजहब कुछ कहता है तो वो किसी वजह से कहता है, राइट? इसकी अच्छी बुराई अच्छाई ही होती है, क्योंकि हमारा ही मजहब है। I will tell you, Pakistan, Islam is the only religion which gave the freedom to the women. Exactly. क्योंकि पहले जमाने में जब औरतों को दफना देते थे, इस्लाम तो नहीं था, ये लोग ही थे ना, यहूदी थे, ईसाई थे, मुशरिकीन थे, वो लोग ही थे जो औरतों को जला देते। तो इस्लाम ने आके औरतों को इज्जत दी है, राइट? हमारे नबी खुद औरतों को इज्जत देते थे। लेकिन अब ये तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बट ये है कि सोशल का मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि आजकल के दौर में सोशल लाइफ इज ओनली फेसबुक। डू यू थिंक दैट? I'm not on Facebook myself, but I think so. It's basically both based on internet friends. You barely meet anyone in person. It's all based on internet. सही बात है। ठीक है, सही है। तो नाज़रीन, बहुत अच्छी सी हमें बहुत अच्छा बताया मिनाल ने, बहुत मजा आया, बहुत जल्दी टाइम पास हो गया कि इतना अच्छा मुझे लग रहा है उससे बात करके। और आई विल थिंक दैट इंशाल्लाह हमारे बच्चों को अल्लाह मियाँ और नॉलेज दे, वो अच्छे से अच्छा लिखें, अपने मजहब को, अपने कल्चर को समझे और दूसरों तक उसको लाने के लिए कोशिश करें। इसलिए हमने कहा कि हम इन्हें बुलाते हैं, ताकि इसने जो भी बुक्स लिखी हैं, जो भी अपने व्यूज़ और आइडियाज शेयर किए हैं, वो इस ऐसे थे कि हम चाह रहे थे कि आप लोग को भी बताएं कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है। वो ये सिर्फ ये नहीं है कि
और भी बहुत से टैलेंट्स होते हैं, लेकिन लिखना इस उम्र में और अपने आप बीती अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो लिखना बहुत बड़ी बात है. तो Menahil, it was very nice meeting you. It was very nice that you came here, and I hope my young generation, my parents who are my audience, especially parents, fathers, mothers, दोनों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप just go through that. आप दोनों में अभी भी थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, देख लो, बहुत कुछ मिल जाता है, right? That's what your motive is, that people should read your book and what your people and students or youngsters like you are facing nowadays, right? तो ठीक है नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह मेनाहिल का बहुत बहुत शुक्रिया वो आई हमारे पास, और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक अगले नए मेहमान के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज. मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में.